The vendor customer reduce the cost and improve the quality of the good and service while increasing the speed of delivery. तो e-commerce ର ପ୍ରଥମ bigger challenge ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡର କରିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଳାଉଛେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି କିଣିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ e-commerceରେ ଆମେ କେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଯଦି ପାଇପାରୁଛେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିଜନେସଟା ଅଧିକ ରହିବ। ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ସବୁ ଅଛି। इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज माने फ्लिपकार्ट रे जो देखुछ जो ड्रेस किनुछ से इलेक्ट्रॉनिकली बा तुमको सब ड्रेस गुड़ाक सब शो करूची। इलेक्ट्रॉनिकली मेल तापर तुम तले ऑर्डर करूछ तुम मेल रे गोटे कन्फर्मेशन आसुची केबे आसी पहुंचीबो। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड कोठी अराइवल हला ट्रैकिंग आईडी ये सब देखइबो। तापरे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, फोन पे गूगल पे रे हमें फंड ट्रांसफर करूचे। अदर नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माने तार एडवर्टाइजमेंट जेमति कि हमें फेसबुक ओपन करचे, इंस्टा ओपन करचे, तादरे फ्लिपकार्ट रो भी एडवर्टाइजमेंट रहउची यादरे कि तुमे परचेज करि परिबो। तो एटा रहला कोन ई कॉमर्स रो डिफरेंट फीचर। तो फीचर आमे देखिबा जदी प्रथम होचे कैशलेस पेमेंट। एटी कोनोसी प्रकार रो फिजिकल ट्रांजैक्शन बा टंका रो दबा दबा किछि पड़िबो नै। सर्विस आर सब बेले खोला रहिबो, दुकान 24/7 खोला। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग अधिक लोकों पाखु रीच करी हबो। तुमे जे कोनोसी लोकेशन चूज करिवो आ से समय तुमे सेति पैसा इन्वेस्टमेंट करिवो, ऑटोमेटिक सेति लोक जति से एरिया रो जति लोक फेसबुक यूज करथिबे ओपन करिया मात्र तमर एडवर्टाइजमेंट ता तंक पाखरे पहुंचीबो। तेनु एठी आउ लिफलेट दे की फोपाड़ीवार कोनोसी प्रकार संभावना न थाए, लोकों पाखरे ऑटोमेटिक पहुंचीबो। Improve sales using e-commerce, order for the product can be generated anytime anywhere। तो यहाँ पे कौन सी पर्टिकुलर टाइमिंग दरकार नहीं। e-commerce provide various way to provide pre-sales and post-sales assistance। pre-sale and post-sale जेतले एबे आमे फ्लिपकार्ट रो जे कौन सी क्रॉम्पटन हो जे कौन सी मोबाइल भी किनुचे तार सर्विस भी से प्रोवाइड करूछन। तमे जदी कौन सी फैन किनुछ तार इंस्टॉलेशन पे इंजीनियर पे फ्लिपकार्ट हायर करछि, तमे सेठी असिस्टेंट मार दबो, से तुमको कॉल करिवे, तार टोकन अमाउंट नेबे, आनी इंस्टॉल कर देई पड़े। तो आगुर नथला जे मु किनी के आनीबे किए लगेइबो, से कंपनी वाला को फोन करे नै आम पाखरु फिजिकल किन माने आमे लगेइबोनु, तो से द्वंद्व आउ नाही। तो फ्लिपकार्ट निजे ही किछि लोकन को हायर करछि जेटा कि कंपनी तरफ रहिछन, से माने जाके इंस्टॉल करछन। तो एई टाइप रो सर्विस मध्ये तदरे मिलुछि। देखो व्हाट इज ई-कॉमर्स। देखो ई-कॉमर्स इज द ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग of goods and services involving digital transaction, website app, marketplace, like Flipkart and Amazon, connecting business and consumer globally, connecting business
and consumer globally for convenient shopping, payments, and delivery. তাহলে how it works, out heading there, how it works, out heading the digital storefront, और ଆସିବ digital storefront जो डिस्प्ले करिया पे digital storefront. Business use website, mobile app, business use website, mobile app or platform to display products, তারপরে heading the consumer interaction, shopper browse, add item, shopper browse add item to the digital cart and check out. Secure payments, payment gateway process transaction, like credit card and debit card, payment gateway process transaction like credit card and debit card. Logistic, inventory is managed and products are shipped to the consumer. Data exchange, next. Electronic data interchange and other system manage the flow of information. It uses, next point there, তଳେ ଗୋଟେ heading ଦେଇକି ଲେଖ, ଗୋଟେ ପାରା କରି ଲେଖ. It uses paperless exchange of business first point ଲେଖ electronic data exchange bracket ରେ ଲେଖିବ EDI,
এটা expand the term question ଆସିପାରେ EDI, electronic data exchange. Next, electronic mail, electronic bulletin boards, electronic bulletin boards, next electronic fund transfer, electronic fund transfer, next point, other network based technology, online social media platforms, online social media platforms. ताले feature of এটা লং কোশ্চেন আসিব 100%. Feature of electronic commerce. First হচ্ছে cashless payment. E-commerce enables use of credit cards, debit card, smart cards, credit card, debit card, smart cards, electronic fund transfer, via net banking, e-wallets, other mode of electronic payment. Next point, 24/7 service availability. 24/7 service availability. E-commerce automates business of enterprise. E-commerce automates business of enterprises and service to customer, enterprises and service enterprises and enterprises service provided to the customer are available anytime, anywhere, and 24/7. Next, advertising/marketing.
E-commerce increases reach of advertising. E-commerce increases the reach of. E-commerce increases the reach of advertising of products and services, products and services of business. Through different online platform like Facebook and Instagram, like Facebook and Instagram. তাহলে improved sales. Using e-commerce, order for the products, using e-commerce, order for the products can be generated, anytime, anywhere, without any human intervention. Supports. E-commerce provides various way pre-sales and post-sales assistance to provide better service to customer. Better service to customer. Then types of e-commerce ଆମେ ଦେଖିବା ତ types of e-commerce ରେ କଣ ସବୁ ରହିବ ଗୋଟେ ହଉଛି licensing model, ଗୋଟେ ହଉଛି business model, और হচ্ছে data exchange model. तो तीनटा टाइप रहिला ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଇସେନ୍ସ ମଡେଲ, ଲାଇସେନ୍ସିଂ ମଡେଲ, ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡେଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଡେଲ.
এই ফার্স্ট লাইসেন্স মডেল রে এগेन आ पाखर आम दीटा जिनस पाइबा लाइसेंस मॉडल है ऑन प्रीमाइज ई-कॉमर्स आउट रहिबो सॉफ्टवेयर आज सर्विस ऑन प्रीमाइज ई-कॉमर्स कौन आसीबो दिस काइंड ऑफ ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू इनिशियल वन टाइम परचेज माने मु थरे सॉफ्टवेयर किनिबी ताको यूज करिवि मो रिक्वायरमेंट हिसाब रे आउ केवल ताको मेंटेन करिवि ओके माने मते मु घरे कार किनली कार रखिली कार इंश्योरेंस तार मेंटेनेंस सब फाइन फाइन सब मु भरिबी गाड़ी चलेबी सेटा मोर हिक रहिला आउ जहा जेतेबे सर्विस सर्विस दरकार ताको करा जिवो सेमति सॉफ्टवेयर गोटे किना हबो तार अपडेशन ए सब तमे टाइम वाइज ताको करिवो आ तार कंप्लीटली जिंस तमे बियर करिवो आदरे आमे किछि पैसा आमे निजे इन्वेस्ट करिवा आ गोटे होची सॉफ्टवेयर एज सर्विस अर्थ होची कोन मते जेतेबे कोनसी जगह बुलिवार अछि मु गाड़ी किनिबिनी मु गाड़ी को भड़ा रे नै आदरे मते फाइन दबार भय नथिबो मेंटेनेंस रे कोनसी माने ये नथिबो डिस्टर्ब नथिबो वन टाइम आनली पैसा खर्च करली गली बुल्ली आसली सॉरी माने मते आउ कोनसी प्रकार टेंशन नथिबो आ जेतेबे दरकार वर्षा फर्षा हला ओला उबर बुकिंग करके ऑफिस जी तो एटा होची सॉफ्टवेयर एज सर्विस माने मु सॉफ्टवेयर टाको किनिबिनी सॉफ्टवेयर टाको जनकर सॉफ्टवेयर थिबो से सॉफ्टवेयर टाको एज अ सर्विस हिसाब मु यूज करबी ता सर्विस रिलेटेड कॉस्ट गुडा को मु देबी जेमति हमर लर्निंग ट्री ऐप होची सॉफ्टवेयर एज सर्विस ओके तारा प्लेटफॉर्म कि रहउची ने क्लास प्लस तो सी क्लास प्लस कोन करूची ने जो माने एजुकेटर अछि ने ताको से ऐप टा प्रोवाइड करूची तनो मु जत्ते एक्सटेंड करिया कथा नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ डेटाबेस मु तापे ओरिड हवर नै मते डेटाबेस किनिवार नै मते मेंटेनेंस रो कोनोसी प्रकार रो झंझट नै मु ताको पेमेंट कर देली लाइसेंस पे बस मोर यूज करी जेतेबे जा मेंटेनेंस से ताकर ही करी तो मोर ता पे कोसी पदर अबाउट करिया नै यदि एटा मोर सॉफ्टवेयर हेतंदा मु ताको अपडेट करथांते बुझी थांते यारे कोन हला ताको अपडेट कर तो ए सब जिंस मते करियो को पड़ता तेनु एटा हमें सॉफ्टवेयर सर्विस रा एग्जांपल नै परिबा तो ऑन प्रीमाइज हेडिंग दियो प्रथम हेडिंग दियो लाइसेंसिंग मॉडल ता अंडर लेख ऑन प्रीमाइज ई-कॉमर्स on premise e-commerce this kind of e-commerce software requires an initial one time purchase investment an initial one time purchase investment next point the customer will also have to invest some money in hardware and installation of service next point data migration ongoing maintenance as well as yearly fees for software
for softwares, yearly fees for software updates and support should be taken. Support should be taken. Could ରହିଲା କହ? Ongoing maintenance, yearly fees for software updates, yearly fees for software updates and support should be taken into account. Taken into account. ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କିଣିବା ସହିତ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇୟରଲି ଫିସ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। Next point, it is secure, customizable, it is secure, customizable and reliable in terms of performance. In terms of performance. अभी तो आउट छाड़ दीजिए ओपन सोर्स रहिବ। Then software as a service. Meaning the software as a service. SaaS is a SaaS, SaaS, SaaS ନୁହଁ ସେଠି କହି କଣ ମୂଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହେଲେ ବାହା ହଉଛି ନା SaaS, S small a capital S. Expand the term में पड़िବ software as service. It is a cloud based delivery model. It is a cloud based delivery model where it is a cloud based delivery model where each application is hosted and managed. Each application is hosted and managed in a service provider data center. In a service provider managed in a service provider data center. Next point, it is paid for an subscription basis. It is paid for an subscription basis. ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଛଡ଼ିଗଲା ଓପନ ସୋର୍ସ ଇ କମର୍ସ। ଓପନ ସୋର୍ସ e-commerce. Open source e-commerce. Open source e-commerce is a free platform. Open source e-commerce is a free platform. Open source e-commerce is a free platform allowing the user. Open source e-commerce is a free platform allowing user to install maintain, secure and configure the software, on their own server. Next point, it needs basic technical expertise. It needs basic technical expertise in web design and development field. In web design and development fields. In web design and development fields.
Next point. There is a wide variety of different ardents are available. There is a wide variety of different ardents available to boost its functionality to boost its functionality. ये गला आमे जो पढ़िले एटा थिला लाइसेंस मॉडल. तो नेक्स्ट मॉडल आसीबो बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल बिजनेस मॉडल रे प्रथम पॉइंट आसिला B2B, that means business to business. Business to business, B2B, business to business. ହେଲା बिजनेस टू बिजनेस रे कोन आसीबो माने तमर जमी अछि तमे मते बिकिबो मु होची लैंड डेवलपर मु ताको कोन करबी सब रास्ता फास्ता करी पाचरी बुलेकी आउ जन बिकी. तो यहाँ हूँ B2B माने मु होची इंटरमीडिएट बायर मोर जगह किनिकी घर करिवार नै मु जगह किनिची आउ जन को बिकी बोली ताको डेवलप करी आउ अधिक पैसा लगे. तो मु होची इंटरमीडिएट बायर तेनो एई जो बिजनेस मॉडल टाको कुआ जीवो B2B बोली कुआ जीवो. बुझिला तो लेख वेबसाइट फॉलोइंग B2B बिजनेस मॉडल website following B2B business model website following B2B business models sells its product to an intermediate buyer 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 who then sells who then sells the product to final customer who then sells the product to final customer. Hello. Hello. तापर आसीबा में B2C सेकेंड टा हला B2C is business to customer business to customer বা consumer যা লিখে একা consumer. एटी होची कोन मु डायरेक्टली जिनस कोन करबी ना कस्टमर को बिकीबी माने जमी जन को डायरेक्ट बिकीबी सी तार घर कला तो एटा होची बिजनेस टू कंज्यूमर. देखो वेबसाइट फॉलोइंग B2C बिजनेस मॉडल वेबसाइट फॉलोइंग B2C business model sells its product directly to consumer
direct to the consumer. Next point, a consumer can view the product on the website. The consumer view the product on the website and place the order for the same. And place the order for the same. The third है consumer to consumer. C to C. Consumer to consumer or customer. तो ये कौन रहिबो कस्टमर टू कस्टमर बा कंज्यूमर टू कंज्यूमर रे मोर गोटे जिनस अच्छी धर मु बिकिबी तो मु OLX रे कौन करी अपलोड कर देबी तापर बिकिबी आई वांट टू सेल माय बाइक और आई वांट टू सेल माय कार ओके और प्रॉपर्टी तो से अनुसार कस्टमर से वेबसाइट को जी विजिट करवा और डायरेक्टली से कस्टमर को कॉल करेंगे आ भीतर कौन सी प्रकार जो मु कौन सी कंपनी को बिकी देनी मु कस्टमर को डायरेक्टली बिकिली ओके तो ये हूँ कंज्यूमर टू कंज्यूमर देखो वेबसाइट फॉलोइंग सी टू सी बिजनेस मॉडल वेबसाइट फॉलोइंग सी टू सी बिजनेस मॉडल वेबसाइट फॉलोइंग सी टू सी बिजनेस मॉडल helps consumer to sell their assets helps consumer to sell their assets helps consumer to sell their assets like residential property cars residential property car motorcycle or rent a room by publishing their information on website then next model आसीबा consumer to business C to B এটা आसीबो consumer ମୁଁ ସ୍ପେଲିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ କରିଦଉଛି କି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଏନ୍ ହବ ସବୁ consumer to business कंज्यूमर टू बिजनेस होची कौन पॉलिसी बाजार मु जीवी पॉलिसी बाजार मु कंपेयर करी को पॉलिसीटा मो पाई भल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कि गाड़ी जो पॉलिसी करी ता भीतर मु कंपैरिजन करी डिफरेंट आईसीसीआई ये सब तांकर सब ऑफर देथिबे ता भीतर मते जोटा सस्ता लागिवो जोटा कन्वीनियंट लागिवो सेटा मु चूज करी तो एटा कहा जाय कोन कंज्यूमर टू बिजनेस बोली कहा जीवो माने कंज्यूमर अलाउ करिवो सब बिजनेस प्लेटफॉर्म को गोटे जगह आसीबा पई मु सेठू चूज करी मु कोटा किनी बुझे जन बाली यात्रा सब जगह कंपनी थी मुझे जो को आइसक्रीम खाइबी तो यहाँ हूँ कंज्यूमर टू बिजनेस ओके देखो इन दिस मॉडल ए कंज्यूमर अप्रोचेस वेबसाइट तो होटल सर्च कर सब देखे हॉलिडे पैकेज इन दिस मेथड ए कंज्यूमर अप्रोचेस वेबसाइट showing multiple business organizations
showing multiple business organizations for a particular service, for a particular service. Next point, consumer places an estimate, of amount to spend for a particular service. তারপরে হচ্ছে B2G, business to government. Business to government. ଯେମିତି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଫର୍ମ ପକେଇବା, CHSE ଚାହିଁବ ଯେ ଫର୍ମ ପକେଇବା ତା ଦେହରେ ପଇସା ଆଣିବ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ପକାଉନଥିଲ ତ 200 ଟଙ୍କା ତମେ ଫର୍ମ କ'ଣ କଲ ନା ଭରିଲ, ତା ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ପଇସା ପାଇଲେ, ତ CHSE ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରହିଲା, ସେ ପଇସା ଆଦାୟ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଫାଇନ ଯୋଉ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏସବୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି, ତ ବିଜନେସ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଟିକସ ଯୋଉ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛ, ଟୋଲ ଗେଟ୍, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ତାକୁ ନେଇଛି, ଆଉ ସେ ଯାହା ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଅନଲାଇନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ତା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବ, ଯିଏ ଟେଣ୍ଡରରେ ନେବ ସିଏ ସେଟାକୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତାର ରୟାଲିଟି ଦବ। ଏଟା ହେଉଛି ବିଜନେସ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ B2G model is a variant of B2G model is a variant of B2B. Next point, websites are used by government to trade and exchange information with various business organization. Such websites are authorized by the government and provide a medium. Authorized by the government ଖାଲି କହ, authorized by the government. ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ କ'ଣ, 6 ନମ୍ବରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ G2B। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଜନେସ ଯେମିତି ସେ ଅକ୍ସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, କିଏ ଅକ୍ସନ ନବ, ରୋଡ କିଏ ଭରିବ, ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିବା ରେଲୱେରେ। ଟିକେ ବସିଥା, କ୍ଲାସ ଇଂଲିଶ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍। ଏବେ କାହାର ତମର ଅଛି ଓଡ଼ିଆ? ହଁ, ଇଂଲିଶ ଚାଲିଛି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର। Government uses B2G model website. Government uses B2G
model website to approach business organization such websites support auction tenders and application submission. बायो इधर बैठो आईटी उधर आओ. आउ खाली रहिला गोटे गवर्नमेंट टू सिटीजन एटा सरीगले एटा सरीजिवा और डाटा एक्सचेंज मॉडल एटा सरले ए चैप्टर दी एंड हे जिवो तापरे आमे यार आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन खाली रहइबो चैलेंजेस